Good morning, dear students. This is Sudesh Shukla. Hope you are well in this pandemic. I wish you will take care of yourself. So, let's start our discussion for the topic antenna subsystem. Dear students, let's start our topic for antenna subsystem. So, first of all, we have to know what is antenna. Generally, if I write a single line definition, that is very perfect definition and easy to learn. That is an antenna. An antenna is simply a means for radiating or receiving the radio waves. This is the best definition. An antenna is simply a means for radiating or receiving the radio waves. Generally, dear students, if we go for the communication and we are using the antenna for that communication, so via satellite, we generally refer the frequencies like microwave frequencies, which lie under the category of radio wave frequency. So that's why I have written here, antenna is simply a means for radiating or receiving the radio waves. Dear students, antenna जनरली वी यूज हम रेडियो वेव्स को या तो ट्रांसमिट करने के लिए या तो रिसीव करने के लिए वी यूज एंटीना. जनरली दिस एंटीना कन्वर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक कैरियर सिग्नल्स टू पोलराइज्ड electromagnetic fields and vice versa. Dear students, that antenna basically what it do, it converts the electrical carrier signal to the electromagnetic waves, because that electrical signal will not travel in the space or in the free space, generally we mean to say. So that a form of energy, that means electrical energy, must be converted into a wave so that it may travel in the space, because every components which we are using, their source of energy is electrical energy, whether it may be electronic device or whether it may be electrical device. We all know, हमें पता है उन सब की रिक्वायरमेंट क्या है, जो उनकी इनपुट सोर्स की एनर्जी है, उन सब की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब कोई एम्पलीफायर है या कोई फिल्टर है, उसको हम वेव्स से तो ऑपरेट नहीं करेंगे, उसको वेव्स से क्या पता लगेगा, कुछ नहीं समझ लगेगा. तो उसके लिए हमें जो उनको एनर्जी देना है वो क्या देना होगा, किस फॉर्म में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या करंट के फॉर्म में होना चाहिए. तब तो हम फिर उनसे जो भी एप्लीकेशन हमको लेना है वो हम ले पाएंगे. अब जो इनपुट सोर्स जैसी रिक्वायरमेंट है उसी तरह से एनर्जी हमको चाहिए. अब अगर एक फैन है, फैन की रिक्वायरमेंट क्या है, फैन का एप्लीकेशन है हमें हवा लेना. अब फैन से अगर आप चाहते हो कि फैन से जो है आप हवा ले सको, तो उसके लिए इनपुट की जो रिक्वायरमेंट है डेट इज वो वोल्टेज और करंट है, डेट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. अब अगर उसको आप धूप में रख देंगे तो क्या वो फैन चलने लगेगा, नहीं चलेगा. अब अगर मान लीजिए विंड एनर्जी के पास रखते हैं, तो विंड एनर्जी से अगर आप फैन चलाते हैं तो विंड जितनी आपको हवा दे रहा है, तो फिर फैन की ज़रूरत ही क्या है. बात समझ रहे हैं आप. तो लाइकवाइज जो इसके इनपुट सोर्स है उस वही एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, तो डेट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एंटीना सिंपली यही करता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम दूर तक नहीं सेंड कर सकते हैं, तो फ्री स्पेस में नहीं ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो हमें जो भी फॉर्म की एनर्जी उसको वेव्स में चेंज करना होगा, और वही काम आपका क्या करता है, एंटीना करता है. गॉट इट. So transmitting antenna, so there will be two type of antenna, transmitting antenna and receiving antenna. So transmitting antenna is composed of a feed assembly that illuminates an aperture reflecting surface from which the electric field radiates. This is what a transmitting antenna. And receiving antenna
has an aperture or surface focusing an incident radiation field to a collecting feed, producing an electromagnetic signal proportional to the incident radiation. That means, dear students, if we are going for the transmitting antenna, there must be radiating feed, the feed through which we transmit or receives the signal. That is all located at the antennas. If you all have a parabolic reflector at your home for the DTS service, there you will go to see that feed which is radiating or receiving. That depends upon the antenna, but generally जो डायरेक्ट टू होम सर्विस में हम एंटीना यूज़ करते हैं वो सिग्नल सिर्फ रिसीव करता है ना कि ट्रांसमिट करता है. तो वहाँ पे जो वाइट कलर का पोर्शन लगा होता है दैट इज व्हाट फीड. सो इन द केस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना द फीड इज रेडिएटिंग टाइप एंड इन द केस ऑफ रिसीविंग एंटीना द फीड इज ऑफ type of collecting feed. So this is for transmitting and receiving antenna. So let's go for the antenna parameter. The next topic is antenna parameter. Antenna parameter. Dear students, the most important parameter to consider in antenna design are its gain, beam width and side lobes. These are the most important parameters. So let's start to discuss about the first antenna parameter, that is antenna gain. That is antenna gain. So dear students, the gain of an antenna refers to the energy. Before it, I just want to tell you कि जब कभी भी हम गेन की बात करते हैं, dear student, that means output upon input. प्रीफिक्स में whatever it may be. अब प्रीफिक्स में अगर वो वोल्टेज है that means वोल्टेज गेन. अब प्रीफिक्स में वो करंट है that means करंट गेन. तो अब वो चाहे वोल्टेज गेन हो चाहे करंट गेन, that means आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज. करंट गेन है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट. पावर गेन है तो that will be. So this is all about the antenna gain, dear students. Thank you.